Hello everyone, welcome to Management Gyan Amrit by Soumya Agrawal. We'll be doing Labor Market Unit 10 of Code 55 today. In this, we'll learn about what is labor, how is labor market working, and demand and supply of labor, constituents of labor market, and various other topics. So, what is labor? A use of mental, physical, and intellect of a person to produce goods and services for money. Labor is the effort that people contribute to the production of goods and service. कोई भी physical, mental work जिससे we fetch up some amount of money to earn our livelihood, that is what is considered as labor. There are basically four categories of labor. One is skilled. किसी भी पर्टिकुलर काम को करने में कोई स्किल दी जाती है तो उसे स्किल्ड लेबर कहते हैं. देन इट इज़ अनस्किल्ड लेबर विदाउट ट्रेनिंग एंड सेमी स्किल्ड, जब किसी काम को करने के लिए अ लिटिल बिट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड to do that task, it is called as semi-skilled labor. Contract labor means a labor which is being supervised to do a task for a definite period of time and for a definite wages. कोई काम जो एक डेफिनेट पीरियड के लिए रेडी हुआ है और उसे एक डेफिनेट वेजेस के विद इन करना है, दैट इज कंसिडर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर. नेक्स्ट इज लेबर मार्केट. So, labor market is a place where workers and employees interact with each other. In a labor market, employers complete to the higher and best, the workers complete for the best satisfying job. एक ऐसी place जहाँ employers as well as employees interact with each other to finalize the job as well as the amount to be paid against the work is considered under labor market. Labor market theory is an explanation of how wages are determined and workers allocate to different jobs. कैसे wages determine होती हैं और कैसे workers are being allocated to do different kinds of jobs. The work that has been allocated is being given by the employer और जो wages determine होती हैं वो by the interaction of both the employer as well as the employer. That deals under the labor market theory. Now, the feature of labor market. Number one is demand of labor is also called as derived demand. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है. वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज डिराइव डिमांड? बिकॉज लेबर की डिमांड क्यों है? क्योंकि देयर इज़ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट लेबर इज़ प्रोड्यूसिंग, इसलिए इसको डिराइव डिमांड कहते हैं. सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल इनटू नंबर ऑफ आवर्स दे आर रेडी टू वर्क. नंबर ऑफ लेबर्स अवेलेबल मतलब कितने लेबर्स हैं मार्केट में जो कि विलिंग हैं वर्क करने के लिए, एंड इनटू नंबर ऑफ आवर्स दे आर रेडी टू वर्क एंड द वर्किंग आवर्स इन विच दे हैव टू वर्क. ठीक है. द पॉइंट एट विच द एम्प्लॉयर इज रेडी टू हायर एन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय इज रेडी टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. जिस पॉइंट पे एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉय मिल जाता है फॉर इट्स एक्चुअल पोजिशन who he is ready to hire for that particular work, and at the same time employee gets the particular wage rate he is actually willing to do the job in, that point is known as equilibrium point या फिर wages determination point, जिस point पे wages determine होती हैं. And this is the point where the demand meets the supply of labor, जहाँ पे employee and employer both meet its demand. Labor force is considered as the people between 16 to 64 years of age. जितनी भी लेबर फोर्स है, लेबर्स जो 16 से 64 ईयर्स के हैं उसके बीच की जितनी भी एज के पीपल हैं वो सब लेबर फोर्स में कंसिडर होते हैं. ठीक है. लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड एंड करेंटली एम्प्लॉयड वर्कर्स. मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो 16 से 64 की एज के बीच में आते हैं, वेदर इट इज़ अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, पार्टली एम्प्लॉयड और whosoever is willing to do a task between that age group is considered under labor force. So the willingness to work is an essential element of labor force. Next is, there are three types of labor market. One is primary, means that deals with raw material. Another is secondary, that deals with manufacturing, and the third is tertiary, that deals with services in a sector, means transport, communication, banking, education, health, various services that are under each sectors. मैन्युफैक्चरिंग में हमारा वेरियस गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड प्राइमरी सेक्टर्स में हमारी नेचुरल सेक्टर्स आते हैं लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ लेबर. लेबर demand is influenced by cost of hiring labor,
कितनी कॉस्ट इन हायरिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इज बीन देयर, वेजेस एंड सैलरीज, किस सैलरी पे या वेज पे हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद टैक्स पे इन एडहेरेंस विद द एम्प्लॉयमेंट एंड कॉस्ट रेगुलेशंस। एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट से, टैक्सेशन लॉज ऐसे क्या हैं जिससे डिमांड ऑफ लेबर पे असर पड़ रहा है या फिर कॉस्टिंग पे असर पड़ रहा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिमांड ऑफ लेबर। वी नो हम जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखेंगे, अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है तो वील बी कीपिंग लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम देम ओनली। ठीक है, तो वील बी पेइंग देम हायर। अगर हम कम पे किसी को रखेंगे और तो हम काम भी उनसे कम ले पाएंगे। इन दैट केस वील हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लार्ज नंबर ऑफ देयर विल बी मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट लेस पे, सो इट विल बी नेगेटिवली स्लोपिंग। अगर हम इस कर्व को देखें तो वेजेस is being a vertical y-axis and quantity of labor at x-axis, that is displaying the negative sloping curve कि जितने ज़्यादा wages होंगे उतने number of laborers कम होंगे। Next is supply of labor. Supply of labor is influenced by changes in income. अगर किसी भी एम्प्लॉय को ज़्यादा इनकम मिलेगी तो ही विल बी मोर इनटू वर्क, वो जल्दी विलिंगनेस बन जाएगी वर्क करने के लिए, एक्सपेक्टेशंस उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी वर्क को लेके। एंड नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास किसी भी कैटेगरी में ज़्यादा है सप्लाई किसी चीज़ की तो इट विल इम्पैक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट फैक्टर ना, तो इट विल बी हैम्परिंग समवेयर द सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में व्हाट विल बी द ग्राफ, वी नो एज पर द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉय, जितनी ज़्यादा इनकम मिलेगी एम्प्लॉय को उतना ज़्यादा एम्प्लॉय की सप्लाई बढ़ेगी। हम अपने एस्पेक्ट से सोचते हैं तो जितनी ज़्यादा हमें इनकम मिलेगी वी विल बी मोर इंक्लाइंड टू वर्क बिकॉज वी विल बी गेटिंग अ हाई पे फॉर दैट। So there will be a positive impact seen, means it will be taking a high up in the right side. There will be a positive relationship between the wages and the number of employees, whereas in demand we have seen a negative impact of wages and the number of people, because वो employer point of view से था और ये एक employer point of view से है supply of labor. So this was it. In the next video we'll be learning about underemployment and unemployment and its various types. Till then, hope you enjoy learning. Thank you.